also love to extend my cordial welcome to our today's speakers, Mr. Kamaljeet and Ms. Neha Dutt. National Service Scheme Kirori Mal College is glad to celebrate National Youth Week, and I also take pleasure to wish a very happy Youth Day to young audience. National Youth Day, also known as Vivekanand Jayanti, is celebrated on 12th January, being the birthday of Swami Vivekananda. In 1984, the Government of India declared this day as National Youth Day, and since then, this event is celebrated in India every year. And this speaker's session is also organized as a part of celebrating National Youth Week. Moving on, the topic for today's event is sustainability and organic farming. With an augmenting pressure on limited natural resources, I would request all of you to please mute yourselves. Thank you. With an augmenting pressure on limited natural resources and an ever-increasing demand, it has become extremely important to adopt more eco-friendly and long-term sustainable methods of production. With rapid explosion in population worldwide, sustainable use of resources has become a major concern for most of the developed and developing countries. It is the need of the hour to spread awareness regarding the significance of SDGs and organic methods of production. In accordance with this, National Service Scheme Kirori Mal College is elated to conduct an interactive session on sustainability and organic farming. Beginning with the program, I would first of all urge all of you to please mute yourselves to avoid any disturbance, and I would also request all of you to please switch on your cameras. Moreover, I would cordially welcome our NSS officer, Mr. Ram Sunil Kumar Lalji, sir, to please address the audience. Over to you, sir. Yeah. Thank you, Pragya. Thank you so much. In fact, it is my pleasure to invite you all and welcome to this occasion, Youth Day, that is being celebrated since 1984, on the birth anniversary of Swami Vivekananda. So, I mean, this event, and very interestingly, our NSS students, they have programmed wherein we are giving some information to our students about the organic farming, about the different activities they should take up. So we have two very distinguished speakers. One being the Kamal sir, who has been into this, the director of Kisan Sanchar, and into this with masters in science and food technology, and he has some more than 20 years of experience. And he is going to tell us all about organic farming and how that our young minds can innovate and create something new using the organic methods. And coming on to the next speaker, Ms. Neha Datta. She is again a passionate project blogger, and she is again pursuing her law, but she has taken steps. She has been very active blogger, and she's, I mean, a real inspiration to you all. So we have two very eminent speakers. We are going to listen to them all. So, and this is the occasion wherein that was planned well in advance. That was the reason that we actually wanted to reschedule it to 11:30, because there was another event with the Prime Minister that was to be attended by our NSS volunteer. But since there is tight schedule with our speaker, so we cannot postpone it. But yeah, we'll try to go as per the timings. So I welcome everyone on behalf of the entire NSS unit and on behalf of the college. So let's listen to our speakers and get enlightened with their thoughts. Thank you so much and welcome everyone. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So without any further delay, I would like to introduce our audience with today's guests. Though sir has already done a brief introduction, but let me again introduce you guys to the guests present here among us. We have with us Mr. Kamaljeet, Director of Kisan Sanchar. He has done his Masters of Science in Food Science and Technology. He has also done Organic Leadership course and Master Class Organic Leadership course. He has also contributed in various projects such as organic certification of farmers in Haryana, Punjab, and Uttar Pradesh, mentoring of grassroots innovators for developing their innovations into enterprise,
development of web application for conducting of mobile surveys, and many more. We are honored to have you among us, sir. Now I take pride in inviting you to address the audience. Over to you, sir. गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. सभी को नमस्कार. क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं क्या? जी हाँ सर, जी जी. आदरणीय श्री राम सुनील कुमार जी, NSS कोऑर्डिनेटर, किरोड़ी मल कॉलेज, एंड डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स एंड द स्टूडेंट्स. मेरा नाम कमलजीत है और मैं पिछले 20-21 सालों से ऑर्गेनिक फार्मर्स के साथ काम कर रहा हूँ. मैंने बहुत सारे लोगों को ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए देखा है. हालांकि मुझे कभी मौका नहीं मिला ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का, लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत सारे लोगों का अकाउंट है, उनके एक्सपीरियंसेस हैं, और देश में और दुनिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग की जो स्थिति है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा अवगत कराना चाहता हूँ. हमारे देश में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग शब्द है, इसको इंट्रोड्यूस करने वाला जो मंत्रालय है वो एग्रीकल्चर ना होके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स है. ये बड़ी सुनने में बहुत अजीब लगता है कि हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने की. ऐसा उन्होंने क्यों किया? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का जो अंग है अपीडा, जो भारत से एक्सपोर्ट करता है, जब वो लोग बाहर के कंट्रीज में एक्सपोर्टर्स मीट करते थे तो उनको लगता था कि वहां पे ऑर्गेनिक फूड्स की डिमांड है, और भारत में ऑर्गेनिक फूड्स को लेके कोई स्ट्रेटजी या कोई ऐसा पॉलिसी तब उस समय देश में कुछ थी नहीं. तो अपीडा ने इंटरनेशनल जो माहौल को देखते हुए देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करना शुरू किया. और जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है बेसिकली, वैसे तो हमारे देश में हम इसको नेचुरल फार्मिंग कहें, सस्टेनेबल फार्मिंग कहें, या हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हमारे देश में लार्जली ज्यादातर हिस्सों में बिना केमिकल के खेती ही हम लोग करते थे. और जो केमिकल वाली खेती है वो भी अभी पूरे देश में नहीं है. ऐसे बहुत सारे एरियाज हैं जहाँ पे आज भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है. लेकिन ऐसी खेती जहाँ केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता है उसको ऑर्गेनिक नहीं माना जाता. मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं आपको, ऑर्गेनिक फार्मिंग एक कॉमर्शियल टर्मिनोलॉजी है जिसके साथ एक सिस्टम इन्वॉल्व है. वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन. यदि हम एक्सपोर्ट की बात करें, जब हम उसकी बात करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की, तो सबसे पहले जैसे मैंने बात किया थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन. थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन का मतलब ये है कि कोई फार्मर और जो परचेजर है उसके बीच में कोई थर्ड पार्टी होती है जिसको हम सर्टिफिकेशन बॉडी बोलते हैं. वो सर्टिफिकेशन बॉडी ये इंश्योर करती है कि इस सिस्टम के तहत जो प्रोडक्शन किया गया है वो ऑर्गेनिक है. यानी वो प्रोडक्ट को सर्टिफाई नहीं करते हैं, वो सिस्टम को सर्टिफाई करते हैं जिस सिस्टम के तहत उस प्रोडक्ट का प्रोडक्शन किया गया है. तो बेसिकली जो ये है, मतलब ये प्रोडक्ट सर्टिफिकेशन ना होके एक सिस्टम का सर्टिफिकेशन है जिसमें उगाने से लेके प्रोसेस करने से लेके बेचने तक पूरी जो चेन है उस पूरी चेन को सर्टिफाई किया जाता है. और सर्टिफिकेशन करने का जो मंत्र है वो ये है, जैसे हमारे संस्कृत में बोलते हैं ना, मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से. यानी उस पूरी वैल्यू चेन के अंदर जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं, सर्टिफिकेशन बॉडी उन सब लोगों से मिलती है, उनके डॉक्यूमेंट्स को चेक करती है, उनसे बातचीत करती है, उनसे पूछती है कि तुम किस काम को, किस चीज को किस तरह से करते हो. उसी के आधार पे ही जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो उस पूरे प्रोसेस को सर्टिफाई करती है. तो हमारे देश में जो सर्टिफिकेशन का सिस्टम है, मैं पहले सीधा सर्टिफिकेशन पे इसलिए बात करना चाह रहा हूँ कि आपको पूरे प्रोसेस का पता लग जाए कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस चलता है. उसके बाद हम थोड़ा सा प्रोडक्शन सिस्टम पे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि वहाँ पे क्या स्थिति है और वहाँ किस तरह के चैलेंजेस हैं. तो हम अगर जो हमारे यहाँ सबसे टॉप पे जो बॉडी है वो है अपीडा. अपीडा ने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई हुई है जो कि सर्टिफिकेशन बॉडीज को एक्रेडिशन करती है, यानी उनको वो मान्यता प्रदान करती है. उसको बोलते हैं नेशनल एक्रेडिशन कमेटी.
कोई भी कंपनी या सोसाइटी या ट्रस्ट वो अपने आप को सर्टिफिकेशन बॉडी के तौर पे रजिस्टर कर सकता है। उसको रजिस्टर करने के लिए जो नेशनल एक्रेडिटेशन कमेटी है उसके पास जाना पड़ता है, और नेशनल एक्रेडिटेशन कमेटी उसकी कैपेसिटी और उसके क्रेडेंशियल्स को देख के उसको एक्रेडिटेशन प्रोवाइड कर देती है। फिर जो सर्टिफिकेशन बॉडी होती है वो अपने साथ ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट्स को रजिस्टर करती है। जो ऑर्गेनिक प्रोजेक्ट होता है वो उसको बोलते हैं ग्रोअर्स ग्रुप प्रोजेक्ट, यानी एक प्रोजेक्ट में बहुत सारे ग्रोअर्स होते हैं। वो ग्रोअर्स नियर बाय लोकेशन के होते हैं, और उन ग्रोअर्स की एक लीगल फॉर्म भी होती है। वो एक सोसाइटी भी हो सकती है, वो एक प्रोड्यूसर कंपनी भी हो सकती है, वो एक कोऑपरेटिव भी हो सकती है। कहने का मतलब ये है कि एक लीगल एंटिटी होना जरूरी है जिसमें सभी जो ग्रोअर्स ग्रुप उसमें इन्वॉल्व होते हैं, और इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं ग्रोअर ग्रुप सर्टिफिकेशन प्रोसेस। उसके अंदर क्या होता है कि पूरी जो लैंड है आपकी उसको उसका डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। आपके जो फील्ड हैं उनको उसको नंबर दिया जाता है, नाम दिया जाता है, उसके जीपीएस कोऑर्डिनेट्स वगैरह जो हैं वो सारे उसमें लिखे जाते हैं। और इस सब की मॉनिटरिंग के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिसको बोलते हैं ट्रेस नेट। ट्रेस नेट शब्द का जो ओरिजिन है वो ट्रेसेबिलिटी से है, मतलब जहाँ फूड पैदा हो रहा है, जहाँ फूड कलेक्ट हो रहा है, जहाँ फूड प्रोसेस हो रहा है, जहाँ फूड पैकेज हो रहा है, जहाँ को फूड को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, हैंडलिंग कर रहे हैं, और फाइनली उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, फिर उसको बेच रहे हैं। इस पूरी चेन को ट्रेस करने के लिए ट्रेस नेट के नाम से एक ऑनलाइन वेब एप्लीकेशन है जिसको अपीडा ने बनाया है। जो ग्रोअर्स हैं वो भी उस ट्रेस नेट पे काम करते हैं, सर्टिफिकेशन बॉडी भी ट्रेस नेट पे काम करती है, और आपकी जो एक्रेडिटेशन बॉडीज हैं वो भी ट्रेस नेट के ऊपर काम करती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा जो ऑर्गेनिक इकोसिस्टम है वो हमारे देश में ट्रेस नेट के अराउंड चलता है। तो अब इसकी शुरुआत कैसे होती है, इस पूरे प्रोसेस की शुरुआत कैसे होती है? जो ग्रोअर ग्रुप है उसके ऊपर एक स्पॉन्सर होता है। स्पॉन्सर एक बिजनेस हाउस होता है जिसको अल्टीमेटली ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का बिजनेस करना होता है। वो जो स्पॉन्सर है वो ग्लोबली कनेक्ट होता है और वो ऑर्गेनिक फूड्स का ऑर्डर जनरेट करता है। ऑर्डर जनरेट करने के बाद में वो ग्रोअर ग्रुप के साथ में काम करता है, और ग्रोअर ग्रुप उस कमोडिटी का प्रोडक्शन करता है, और वो जो पूरी कमोडिटी है उसको प्रोड्यूस करने के लिए एक फार्म डायरी मेंटेन की जाती है। फार्म डायरी क्या होती है? जो फार्म जिस जहाँ पे उसका प्रोडक्शन हो रहा है, यानी हर फार्म पे एक फार्म डायरी होती है। उस फार्म डायरी के अंदर हर रोज की जो ऑपरेशंस है वो लिखने पड़ते हैं। जो इंस्पेक्टर आता है आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन वाला, वो आके उस फार्म फार्म जो डायरी को देखता है, और फार्म डायरी को देखने के बाद उसके हिसाब से वो सारे जो क्वेश्चंस है वो पूछता है, सारी प्रोसेस को देखता है। अब बात ये आती है कि वो क्या देखता है। कुछ नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं। जो खेत को आप देखेंगे तो उसकी शक्ल, खेत में की जो लेआउट है खेत का, वो ये अपने आप ही बता देता है कि मेरे यहाँ पे केमिकल का कितना इस्तेमाल हुआ है, वीडीसाइड्स का कितना इस्तेमाल हुआ है, पेस्टिसाइड्स का कितना इस्तेमाल हुआ है। जो एक्सपीरियंस इंस्पेक्टर होते हैं वो पहले फार्म डायरी को एक बार अच्छे से उसकी जो कंटिन्यूटी है उसको देख लेते हैं। उसमें वो क्या देखते हैं, क्या ये फार्म डायरी एक ही दिन बैठ के लिखी है किसी ने? यानी कोई व्यक्ति अगर 20-25 पेजों को एक साथ बैठ के लिखता है तो वो पेज पेज ही बता देते हैं कि ये एक ही दिन बैठ के लिखे गए। ठीक है। अगर आप उस फार्म डायरी को रोज थोड़ा थोड़ा करके लिख रहे हो तो उस जो आपकी फार्म डायरी है उसकी शक्ल बता देती है कि इस फार्म डायरी को हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपडेट किया गया है। ठीक है। एक तो आपको यहाँ से जो ऑर्गेनिक जो ऑर्गेनिक फार्म मैनेजमेंट को हम आईसीएस बोलते हैं, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मतलब कि स्पॉन्सर के जो लोग ग्रोअर ग्रुप के साथ काम कर रहे हैं, वो जो फार्म डायरी मेंटेन करते हैं, फार्मर को सिखाते हैं, वो कैसे काम कर रहे हैं। क्या वो बार बार आके काम कर रहे हैं, या एक ही दिन आते हैं और वो रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करके निकल जाते हैं। तो कुछ तो वहां से आइडिया हो जाता है। उसके बाद जब आप खेत के अंदर आते हैं तो जो ऑर्गेनिक फार्म्स होते हैं वहां पे आपको बायोडाइवर्सिटी नेचुरल तरीके से मिलेगी, और जो ऑर्गेनिक फार्मर होता है उसकी जो साइकोलॉजी होती है वो भी वहां पे आपको दिखाई देती है। जैसे मान लीजिए आपने वीड्स पे निगाह डाली, आपको सिर्फ चौड़ी पत्ती वाले कोई वीड नहीं दिख रहे जिन लीफ ब्रॉड है जिनका,
और सब पतली पतली वाले वीड दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि वहां कोई ना कोई वीडिसाइड स्प्रे किया गया है। ठीक है, जब यदि आपको हर तरीके के खरपतवार थोड़े थोड़े दिखाई दे रहे हैं और सॉइल का आपको पता लग जाएगा कि भाई यहाँ स्प्रे हुआ या नहीं हुआ है, वो आपको देखने से उसका आइडिया हो जाता है। मैं आपको साइकोलॉजी की बात बताता हूँ। अभी वीड्स की बात चल रही है। हिसार में एक फार्मर है सुरेश गोयल, वो एक ऑर्गेनिक फार्मर है। मैं एक बार उनके खेत पे गया तो उसमें मैंने देखा कि छोटे से एरिया में उन्होंने खरपतवार यानी जो वीड्स होते हैं, जो एक्स्ट्रा प्लांट होते हैं, उनको निकाल के अलग से रखा हुआ था, लाइन बना के रखा हुआ था। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने ये मैनुअल वीडिंग कराई है? बोले हाँ, मैंने इसको मैनुअल वीडिंग कराई है। तो मैंने पूछा कि आप अगर इसको किसी और तरीके से केमिकल से स्प्रे करते हैं तो आपको सस्ता पड़ता? बोले नहीं, मेरे को सस्ता नहीं पड़ता, मेरे को ऐसे ही सस्ता पड़ता है। तो मैंने पूछा कि अब आपने हाथ से वीडिंग कराई है, कितने पैसे आपके लगे? तो उन्होंने बोला कि मेरे को 1200 रुपए लगे इसको करने में। तो मैंने कहा यदि आपने केमिकल से स्प्रे किया होता तो कितने पैसे लगते? कहते तो 800 रुपए लगते। तो मैंने कहा उनको, देखो आपने 400 रुपए का नुकसान कर लिया अपना। उन्होंने कहा कि नहीं, आपको हिसाब लगाना नहीं आता। मैं आपको बताता हूँ, मैंने नुकसान नहीं किया। उन्होंने मुझे बताया कि जो मैंने मैनुअल वीडिंग कराई है, इसमें मैंने जो 1200 रुपए पे किए हैं, ये 1200 रुपए मेरी लेबर के घर गए हैं। पूरे 1200 रुपए उनको मिले हैं। जो 2 फैमिलीज ने काम किया है, वो शाम को 1200 रुपए लेके गए हैं। और यदि मैं इसको केमिकल से इसकी वीडिंग कराता, तो मेरे 800 रुपए लगते। 800 में से 500 रुपए तो केमिकल कंपनी को मिल जाते, 300 रुपए मेरी लेबर के घर जाते, और उसके बाद मेरी जमीन में जहर गिरता, मेरी लेबर के शरीर पे जहर गिरता, और मुझे बायो रिसोर्स के तौर पे कुछ भी नहीं मिलता। तो अभी क्या हुआ, मैंने जो 400 रुपए एक्स्ट्रा दिए हैं, उससे एक तो क्या हुआ, मेरे फार्म पे जो वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो स्ट्रांग हुई है, वो मेरे फार्म से जुड़े रहेंगे। प्लस वो मेरे को इतना सारा जो ऑर्गेनिक मटेरियल बायो रिसोर्स देके गए हैं, पत्ते देके गए हैं, उनका मैं फिर अपने खेत में खाद बनाऊंगा या उनको किसी और ढंग से उनको यूटिलाइज करूंगा। तीसरा, मेरी जमीन में कोई जहर नहीं गिरा है। चौथा, मेरी लेबर के शरीर पे भी कोई जहर नहीं गिरा है। तो ये जो सोच है, इस तरह की सोच ऑर्गेनिक फार्मर्स की होती है। जो 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 टोटल करते हैं ना, वो उस टोटल में इकोसिस्टम सर्विसेज को भी जोड़ते हैं। मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इकोसिस्टम सर्विसेज। एक तो हमारी ह्यूमन सर्विसेज होती हैं जो पेड होती हैं, एक इकोसिस्टम सर्विस होती हैं जिनका हमें कैश में पेमेंट नहीं करना होता, वो हमें नेचुरल तरीके से ही पेमेंट करना होता है। और वो जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, वही हमारी जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है या नेचुरल फार्मिंग है, उसकी की ड्राइवर होती हैं। हम जब इकोसिस्टम सर्विसेज को समझ जाते हैं, उसके हिसाब से अपनी खेती को ट्यून करते हैं, एक एक कीड़ा, एक एक पत्ता, एक एक पक्षी जो भी उस खेत में आता है, हर एक चीज का एक मतलब होता है। और जो फार्मर इन सब चीजों को समझता है, जो इतना सेंसिटिव हो जाता है अपने आप को, उन सब चीजों का मतलब समझने लग जाता है, वो फार्मर सही मायने में ऑर्गेनिक फार्मिंग करने लग जाता है। और बिना सेंसिटिव हुए, बिना इनोवेटिव हुए, बिना सीखे, बिना ट्रेडिशनल नॉलेज का इस्तेमाल किए हुए कोई भी व्यक्ति ऑर्गेनिक फार्मर नहीं हो सकता। मैं इतने सारे ऑर्गेनिक फार्मर से मिलता हूँ, मैं ये देखता हूँ कि ये सब लोग अपने आप में एक एनसाइक्लोपीडिया है। इनको बहुत कुछ पता है, इतना कुछ पता है कि वो जो बताते हैं वो बहुत थोड़ा बताते हैं, उनको बहुत ज्यादा समझ होती है चीजों की। और ये जो समझ होती है ना, यही हमारी असली वेल्थ है। जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, जैसे हम अभी बात कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, सर्टिफिकेशंस की, जो ये इंस्पेक्टर्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को चेक करने के लिए आते हैं, वो लोग एक नॉलेज डिसेमिनेटर का भी के तौर पे भी काम करते हैं, क्योंकि वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिक फार्म्स में जाते हैं, अलग अलग फार्मर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं। कुछ फार्मर्स जो हैं उनके हल निकाल लेते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, एक वीड है, उसको बोलते हैं फेलेरिस माइनर, और उसको हिंदी में बोलते हैं गुल्ली डंडा। और वो वीड इतनी बड़ी समस्या है, अगर आप उसके बारे में गूगल करोगे तो आपको लगेगा कि मतलब आज की डेट में इससे बड़ी कोई समस्या नहीं है। मैंने आज से 20 साल पहले, एक फार्मर थे सरदार हरपाल सिंह ग्रेवाल, जिनको मैंने सबसे पहले ऑर्गेनिक फार्मिंग करते हुए देखा था। आज से 20 साल पहले उन्होंने मुझे ये कहा था कि जाओ मेरे ये खेतों में घूम के आओ, तुम्हें एक भी गुल्ली डंडा मिल जाए, एक भी फेलरिस माइनर का पौधा मिल जाए तो मुझे ढूंढ के बताना। तो मैं उनके खेतों में घूमा, खूब घूमा, मुझे एक भी पौधा नहीं मिला। तो मैंने तो 20 साल पहले ही इसका हल देख लिया था। तो उन्होंने क्या हल निकाला उस चीज का, जो
धान के खेतों की पराली होती है, जिसके बारे में बोला जाता है कि हरियाणा के, पंजाब के फार्मर पराली को आग लगा देते हैं और वो धुआं दिल्ली पहुंच जाता है। वो पराली एक बहुत इंपॉर्टेंट बायो रिसोर्स होता है। जो सरदार हरपाल सिंह ग्रेवाल थे, वो क्या करते थे, अपनी पूरी धान की पराली को, जब वो वीट सोइंग करते थे, उसके ऊपर में वो पराली को बिछा देते थे, उसकी मल्चिंग कर देते थे। उससे क्या होता था, गेहूं का पौधा तो उसमें से जर्मिनेट होकर पराली से बाहर निकल जाता था और वो ग्रो करने लग जाता था, और नीचे जो पराली बिछती थी वो दूसरे किसी और पौधे को वहां पे ग्रो ही नहीं होने देती थी, एक कवर क्रिएट कर लेती थी। और उस पराली के नीचे आपका सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवॉर्म्स, तमाम ऐसी चीजें जो सॉइल के अंदर एक नेचुरल फर्टिलिटी सिस्टम क्रिएट करती हैं, वो सारी चीजें उसके नीचे काम करती थी। और कोई फेलरिस माइनर, कोई गुल्ली डंडा उनके खेतों में नहीं होता था। और मैंने उनके कोई एक आधे एकड़ में नहीं, 50-60 एकड़ में मैंने घूम के देखा था, एक भी गुल्ली डंडा नहीं था। और उनके पड़ोस के खेतों में गुल्ली डंडा खूब सारा था। तो जो ऑर्गेनिक फार्मर होता है वो इन सब चीजों को समझ फिर यूज करता है। जो कुछ समय तक मतलब कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, वो बाद में इसी कंक्लूजन पे आते हैं कि हमारे को मिट्टी पे सबसे ज्यादा काम करना है। हमारे एक बहुत लीडिंग पर्सनालिटी थे, श्री दीपक सचदेव जी, जिनका 2 साल पहले देहांत हो गया। उन्होंने अमृत कृषि के नाम से एक सिस्टम क्रिएट किया था, अमृत मिट्टी बनाने का। और आज हमारी मीटिंग में एक इनोवेटर भी हैं, सरदार राजपाल माकनी जी, मीटिंग में है वो उनके मतलब शिष्य हैं, और उन्होंने उनका जो पूरा टेक्नोलॉजी है उनको पंजाब का डेमोन्स्ट्रेट किया, और अमृत मिट्टी का उन्होंने प्रोडक्शन शुरू किया हुआ है। अमृत मिट्टी एक ऐसी चीज है जिसके अंदर ऑर्गेनिक जो कंटेंट है, आपका ऑर्गेनिक कार्बन है, वो मतलब 5 से 6-7% तक होता है। और हमारी जो नेचुरल सॉइल्स हैं उनके अंदर ऑर्गेनिक कार्बन 0.04% तक होता है। और ऑर्गेनिक जो कार्बन होती है बेसिकली वो सॉइल में जितने बैक्टीरिया होते हैं जो भी काम करते हैं उनका फ्यूल होता है। तो जब तक ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा तो हमारे जितने भी नेचुरल जो हमारी रिएक्शंस हैं जमीन में, जो बैक्टीरिया को करनी होती हैं, वो वहां पे वो कर नहीं पाएंगे। तो ऑर्गेनिक जो अमृत मिट्टी बनाने का जो प्रोसेस है, वो जो अगर हम कुदरत में जो अमृत मिट्टी बनती है उसका जो प्रोसेस है वो कोई 100 साल से भी ज्यादा समय लगता है, तब जाके मिट्टी उस शेप में आती है। लेकिन जो दीपक सचदेव जी ने प्रैक्टिस बनाई, आप गूगल में सर्च करेंगे अमृत मिट्टी, आप उसको कुछ महीनों में उस मिट्टी को आप अमृत मिट्टी में कन्वर्ट कर सकते हैं। और मिट्टी को यदि आप कन्वर्ट कर लेते हैं और मिट्टी आपकी हेल्दी हो जाती है, तो आपके लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। और सब कुछ मिट्टी से आता है। जो बीज है हमारे, उनका जो जेनेटिक एक्सप्रेशन है, यानी एक बीज कितनी पोटेंशियल में वो यील्ड दे सकता है, कितना अच्छा वो खिल सकता है, वो डिपेंड करता है कि उसको कितना न्यूट्रिशन मिलता है। और न्यूट्रिशन मिट्टी में, इसको मिट्टी से मिलेगा। और मिट्टी यदि हमारी ठीक है तो हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग नेचुरल ढंग से होने लगेगी। तो मैं वही वापस लौट के वहीं आता हूँ, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे। जो सर्टिफिकेशन बॉडी है वो इन सारी चीजों को देख के वो अपना एक नोट बनाती है, और नोट बना के फिर वो सर्टिफिकेशन बॉडी को भेजती है। जो इंस्पेक्टर होता है वो सर्टिफिकेशन बॉडी को भेजता है, और फिर सर्टिफिकेशन बॉडी उन सब ग्रोअर ग्रुप्स में जो लोग हैं उनके वहां से मिट्टी के सैंपल भी लेती है, प्रोडक्शन के सैंपल भी लेती है, और उनके अंदर पेस्टिसाइड रेजिड्यू का एनालिसिस करती है। और एक वर्ड होता है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट। हर एक क्रॉप में एक मैक्सिमम रेजिड्यू लिमिट तय की गई है, जिसको MRL बोलते हैं। उससे यदि कम लिमिट में पेस्टिसाइड आ रहा है तो उस प्रोसेस के तहत जो प्रोडक्शन हो रही है उसको ऑर्गेनिक का सर्टिफिकेट मिल जाता है। और ये मिलने में जो टाइम पीरियड लगता है, मिनिमम 3 साल लगते हैं, मैक्सिमम 5-6 साल भी लग जाते हैं इसमें, डिपेंडिंग अपॉन दी किस तरीके का प्रोडक्शन सिस्टम है, किस तरीके के लोग इन्वॉल्व हैं। अब जो ग्रोअर ग्रुप सर्टिफिकेशन है उसमें एक लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन ये है कि अगर 50 लोग मिलकर काम कर रहे हैं और 50 में से यदि 1-2 लोगों ने भी गड़बड़ कर दी तो सभी लोगों का जो आपका सर्टिफिकेशन है वो समस्या में आ जाता है। तो इसमें कमिटमेंट का जो लेवल है, अवेयरनेस का जो लेवल है, पार्टिसिपेशन का जो लेवल है, वो बहुत
ज्यादा हाई होना चाहिए, कमिटमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए और एक दूसरे को सपोर्ट करने की हमारी इच्छा होनी चाहिए, तभी हम जो ग्रोअर ग्रुप जो सर्टिफिकेशन है उसके अंदर हम लोग कामयाब हो सकते हैं। तो अभी क्या है कि अपीडा ने बहुत सारी सर्टिफिकेशन बॉडीज को एक्रेडिटेशन दिया हुआ है, जिनमें कुछ बॉडीज प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां हैं, कुछ ट्रस्ट हैं, कुछ स्टेट गवर्नमेंट के भी सर्टिफिकेशन बॉडीज हैं। जैसे उत्तराखंड के अंदर स्टेट गवर्नमेंट ने अपनी एक सर्टिफिकेशन बॉडी बना रखी है जो जाके ग्रो ग्रुप्स को सर्टिफाई करती है। अभी सिक्किम हमारे देश में पहला ऑर्गेनिक स्टेट है और जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो भी अपने आप को ऑर्गेनिक स्टेट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो इससे होगा क्या, इससे होगा ये कि जो स्टेट ऑर्गेनिक अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है तो पूरा जो इकोसिस्टम है, पूरे जो स्टेक होल्डर्स हैं, पूरी एजेंसियां हैं, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, स्टोरेज वाले हैं, वेयर हाउसिंग वाले हैं, कंज्यूमर्स हैं, आपके एक्सपोर्टर्स हैं, आपके बिजनेसमैन हैं, सब लोगों को एक सेम पेज पे आना पड़ता है और सेम पेज पे आके सबको मिलके एक जो स्टेट की पॉलिसी है उसके तहत काम करना पड़ता है। और मेरा ये मानना है ऑर्गेनिक फार्मिंग में अगर हमारी यील्ड कम भी हो जाए ना, लेकिन प्रॉफिट कम नहीं होता है। यील्ड और प्रॉफिट ये दो अलग अलग चीजें हैं। किसान से जब कोई कंपनी बात करती है वो समझती है कि जिसके यील्ड ज्यादा है उसका प्रॉफिट ज्यादा है। ऐसा नहीं है। यदि आपकी यील्ड कम है, आपके खर्चे भी कम हैं, तो आप देखेंगे कि आपका प्रॉफिट उसमें बढ़ जाता है, आपकी जो डिपेंडेंसी है वो घट जाती है, आपकी सस्टेनेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। और ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है उसके उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है कि बिना एनिमल्स के ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉसिबल ही नहीं है। जब तक आपके पास एनिमल्स नहीं होंगे तब तक आप ऑर्गेनिक फार्मिंग सोच ही नहीं सकते। कारण क्या है? क्योंकि एनिमल जो हैं वो उसका ऑर्गेनिक इकोसिस्टम के बहुत बड़े मतलब हिस्से हैं। दूसरा, पार्टिसिपेशन। जब तक फार्मर की पार्टिसिपेशन नहीं होगी खेत के अंदर, अभी क्या है केमिकल फार्मिंग में फार्मर की पार्टिसिपेशन बिल्कुल बिल्कुल कम से कम हो गई है। वो सारा काम बाहर से करा लेता है, बुआई वो ट्रैक्टरों से करा लेता है, ठेके पे करा लेता है, फिर ट्रांसप्लांटिंग भी वो ठेके पे करा लेता है, फिर आजकल उसका फर्टिगेशन है, उसकी वीडिंग है, उसके अंदर केमिकल स्प्रे है, सब कुछ ठेके पे होता है। और काटने के लिए कंबाइन वाला भी आ जाता है, ठेके पे आ जाता है। वो तो क्या करता है अपनी ट्रॉली में उठा के मंडी में जाके उसको छोड़ाता है। ये फार्मिंग नहीं है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में सबसे बड़ी बात आपको क्या मिलेगी? फार्मर आपको 365 में से कम 300 दिन खेत पे मिलेगा। वो खेत पे काम करेगा, सारी चीज अपने हाथ में रखेगा, हर चीज को समझेगा, हर प्रोसेस को देखेगा, वहां से उसकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगी। अब मैं बात आता हूँ आजकल के टाइम में ऑर्गेनिक फार्मिंग का स्कोप क्या है। मैं ये देख रहा हूँ दिल्ली जैसे बड़े शहरों में जो किसानों के बच्चे 5 साल 10 साल कंपनियों में जॉब्स करने के बाद वापस अपने खेत में पहुंचे और उन्होंने वहां जो सीखा उसको अपने खेत में अप्लाई किया, तो ऐसे बहुत सारे फार्मर एंटरप्रेन्योर दिल्ली के आसपास उभर के आ रहे हैं जो अपनी खेती कर रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से अपने क्रॉप्स को डायरेक्टली कंज्यूमर्स को भेज रहे हैं। उससे क्या हो रहा है? उनको रिस्पेक्ट, रिवॉर्ड और रिकॉग्निशन तीनों चीजें मिल रही हैं। उनको एज ए फार्मर भी रिस्पेक्ट मिल रही है, उनको पैसे भी ठीक मिल रहे हैं, प्लस उनको पहचान मिल रही है। फार्मर को पहचान मिलना बहुत जरूरी है। जब तक किसी भी फार्मर को ये एहसास नहीं होगा कि मेरी पैदा की हुई चीज कौन खा रहा है और कौन खा के उसके साथ वो हेल्दी रह रहा है, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहां पे लोगों ने हेल्दी चीजें खा के, ऑर्गेनिक चीजें खा के अपनी सेहत को ठीक कर लिया और वो लोग ये उनके मन में रिस्पेक्ट है किसान के प्रति। अब एक चीज होती है ट्रांसपेरेंसी। जैसे आपने बाजार से मंडी से पालक खरीदी या आपने मेथी खरीदी, अब आपके दिमाग में पहला सवाल आएगा, क्या इस पालक को पैदा करने में सीवरेज का पानी इस्तेमाल तो नहीं हुआ है? कितने केमिकल इस्तेमाल हुए हैं? अब जैसे ही सवाल आपके दिमाग में आएगा, आपके दिमाग अब मैं लूं या मैं ना लूं, जब तक आपको ट्रेसेबिलिटी का नहीं पता होगा। मैं चंडीगढ़ में रहता हूँ। चंडीगढ़ के बाहर एक रिवर है, उसको बोलते हैं घग्गर।
उसमें सारा जो है सीवरेज का पानी गिरता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट गिरता है। घगर के दोनों तरफ जम के खेती होती है, उसमें वो सारा जहरीला पानी इस्तेमाल होता है, सीवरेज का पानी इस्तेमाल होता है। अब वो कहीं ना कहीं तो जाता ही है, लोग तो खाते हैं उस चीज को, उसको खा के लोगों को बीमारियां होती हैं। तो ये जो चीजें हैं ना सारी, ऑर्गेनिक फार्मर हैं जो लोग सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, नेटवर्किंग में हैं, जुड़े हुए हैं, वो अपने खेतों को दिखा के, मैं ऐसे किसानों को जानता हूँ सोनीपत में, ग्रुप है फार्मर्स का, उन्होंने अपने खेतों पे टॉयलेट्स बना रखे हैं, टॉयलेट्स खेतों पे। जब वो टॉयलेट्स बना रहे थे तो मैंने उनसे पूछा भी तुम खेतों पे टॉयलेट्स क्यों बना रहे हो? उन्होंने बोला कि यार हमारी जो लेबर खेत में काम करती है वो खेतों में जाती है टॉयलेट करने के लिए, उससे हमारे जो खेत हैं वो पोल्यूट होते हैं और हमारे जो कंज्यूमर्स हैं उनकी सेहत को उससे खतरा है। तो उन लोगों ने अपने खेतों पे आज से 10 साल पहले टॉयलेट्स बनाए। तो इस तरह का जो सेंसिटिविटी लेवल है ना, वो ऑर्गेनिक फार्मर्स में देखने को मिलता है। और जब ये लेवल आ जाता है तो उसके बाद में ना तो उनको किसी चीज की कोई उनको मार्केटिंग की समस्या रहती है, उनको पैसे भी अच्छे मिलते हैं। और जहां तक बात आती है सर्टिफिकेशन की, अभी जो हालात हैं सर्टिफिकेशन के, मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ, उसमें डॉक्यूमेंटेशन वर्क ज्यादा हो रहा है, एक्चुअल में काम कम हो रहा है। पूरी जो व्यवस्था बनाई गई है ना, वो ट्रांजैक्शन जो टीसी बोलते हैं इसको, ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट, यदि आपके पास यदि आपके पास ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट है तो आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक है, यदि आपके पास ट्रांजैक्शन सर्टिफिकेट नहीं है आपका प्रोडक्ट ऑर्गेनिक नहीं है। तो ये सारा जो है, ये मतलब मार्केट की इकोनॉमीज होती हैं, मार्केट का सिस्टम होता है, उस तरह से चीजें चल रही हैं। लेकिन फिर भी इंडिया में ऑर्गेनिक फार्मिंग का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। और मैं ऐसे समझता हूँ कि जो ऑर्गेनिक फार्मर्स होते हैं वो एक अच्छी जिंदगी जीते हैं, दे एंजॉय देयर लाइफ। और फार्मिंग है, इट्स नॉट ओनली अ बिजनेस, इट्स अ वे ऑफ लाइफ। मेरा टाइम हो गया है, मैंने आधा घंटा ले लिया है, वैसे बताने को तो बहुत कुछ है मेरे पास में, तो मैं यहीं ब्रेक करता हूँ, और अगर कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं उनको स्पेसिफिकली आंसर कर दूंगा। थैंक यू। Thank you so much, sir. Thank you so much. And now the floor is open for questions. तो अगर किसी को कोई भी questions हैं, आप या तो type कर सकते हैं chat box में या फिर unmute करके भी पूछ सकते हैं। हेलो जी, हेलो Yes, yes, you are audible. सर एक्चुअली मैं ये पूछना चाह रहा था, Please go ahead. जी पूछिए प्लीज। Yeah, it seems that student has some problem with the network. He is unable to do the questions. Before that, sir, let me ask you one question, which I think, although slightly related, not totally related with organic farming, and that is that in the villages, what we find that there are so many people who are jobless. They're not having any work to do, but still they're not thinking in this manner that they should indulge themselves in some productive organic farming or such activities. They should assist the big farmers or farmers who are doing these activities. Maybe they can help, and that would help solve their problem of unemployment and help the people. लोगों को हेल्प करेगी कि वो उनको खुद को रोजगार भी मिलेगा, और साथ में जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इस तरह की एक्टिविटीज है, उसमें भी उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप ट्रैक्टर मंगाकर आप खेत की जुताई कर रहे हो, जुताई तक तो ठीक है, लेकिन जब आप सारी एक्टिविटीज मैकेनिकल मेथड से करते हो तो उसमें आपका लॉस भी होता है बहुत सारा। और कई बार ये भी होता है कि आप
जल्दी 2 घंटे में काम कर दिया। जो आपने शुरू में बताया था कि भाई जो बच्चे वो 800 का, भले उसने 400 एक्स्ट्रा दिया, लेकिन 2 परिवारों को रोजगार तो मिल गया उस बहाने। बट मैं ये देखता हूँ कि लोग आना भी कम चाहते हैं, लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करना चाहते कि एटलीस्ट 200-400 रुपए मिल भी जाए उन्हें। तो ये एक साइकोलॉजिकल भी इशू है, इसको कैसे टैकल करें, ये मुझे लगता है अगर आप इस पर कुछ कहें। जी मैं एक्चुअल में क्या होता है सर, हमारे जो देश में रोल मॉडल्स है ना, और जो हमारे देश का मतलब नैरेटिव तय करते हैं, उसमें आप देखिए मतलब हाथ से काम करना अभी हमारे देश में अच्छा नहीं समझा जाता। ऐसा मतलब एक साइकोलॉजी हमारा क्रिएट हो गया है। मैं लोगों को देखता हूँ पीएचडी कर जाते हैं, उनको एक्चुअल में कुछ नहीं आता। वो अपने लायक भी कुछ नहीं कर सकते, मतलब ना तो उनको हाथ से करना कुछ आता, ना उनको ऐसा कुछ आता जिससे किसी का बेनिफिट हो सकता है। तो ये हमारा जो सिस्टम है ना पढ़ने पढ़ाने का, सीखने सिखाने का, ये हमारे को एक तरीके से जो हमारे हाथ से करने के जितने भी काम हैं, उन सब से दूर हटा के लेके जाता है। और रही बात अनएम्प्लॉयबिलिटी की, सर मैं बहुत सारे इंटरव्यूज में बैठता हूँ, एक पेज हिंदी का लिखना नहीं आता लोगों को, डिग्री उनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन की है, अंग्रेजी लिखना तो बहुत दूर की बात है। कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो हैं उन्होंने अपने आप को इस ढंग से कभी सोचा ही नहीं कि हम कोई तो काम करना सीख लें। दूसरा क्या है, जो हमारा जो पूरा जो आज का जो हमारी सोच बन गई है ना, वो सिर्फ उस पे आके टिक गई है कि हम कैश कितना जनरेट करते हैं, और जो कैश जनरेट करने का जो फार्मूला है वो है कैपिटल। कैपिटल है नहीं किसी के पास। जब कैपिटल अगर कैपिटल आ भी जाती है तो एक्सपीरियंस नहीं है किसी के पास। तो जो जितना भी यूथ इस समय गांव में घूम रहा है ना, वो एक मेंटरशिप प्रोग्राम उसको चाहिए। वो मेंटरशिप प्रोग्राम उसको पहले फैमिली से मिलता था, कम्युनिटी से मिलता था, सोसाइटी से मिलता था। अभी व्यक्ति फैमिली से भी दूर है, सोसाइटी से भी दूर है, लेकिन वो जिस चीज के करीब है वो है ऑनलाइन। सब लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। तो आज हमारे को ऐसे मेंटरशिप प्रोग्राम्स करने की जरूरत है जिनको हम ऑनलाइन भी जोड़ सकते हैं और लोगों को रिमोटली कनेक्ट कर सकते हैं, रिसोर्सेज को पूल कर सकते हैं। मैं पिछले कई सालों से श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स के बच्चों के साथ काम करता हूँ। उनका एक क्लब है एनेक्टस। अब उसमें हम क्या करते हैं, उस क्लब के अंदर हमारे जो फार्मर्स हैं, गांव में जो यूथ है, गांव में अपॉर्चुनिटी कम है, शहरों में अपॉर्चुनिटी ज्यादा है। तो एनेक्टस के बच्चे दिल्ली में रोहिणी के अंदर किसान बाजार उन लोगों ने ऑर्गेनाइज किया, किसान बाजार, कि हम आपको सीधा फार्मर्स से कनेक्ट करेंगे। तो क्या हुआ, बच्चों ने थोड़ा थोड़ा टाइम लगाया और जाके सोसाइटीज में बात की, एक प्लेटफॉर्म ओपन किया। अब चूंकि श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स का एक बहुत बड़ा नाम है, उस नाम से वो प्लेटफॉर्म ओपन हो गया और वहां पे फिर फार्मर्स को इनवाइट किया गया। तो ऐसे 11 किसान बाजार रोहिणी में हमने लगाए, ठीक है। और फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन बाजारों की जो ओनरशिप थी वो फार्मर्स को अपने आप उन्होंने ट्रांसफर कर दी और वो काम वहां पे धीरे धीरे होने लग गया। तो इस तरीके का जो प्रोग्राम है ना, जैसे आपका कॉलेज है, आपका कॉलेज आपके साथ जो लोग इतने सारे लोग जुड़े हैं, बहुत सारे लोगों को ऐसे मेंटरशिप हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये जो जिम्मेदारी है ना, ये उन लोगों को समझनी पड़ेगी जो ऑलरेडी सिस्टम में बैठे हैं। कोई बिजनेस कर रहा है, कोई जॉब में बैठा है, वो अपने अराउंड लोगों को ढूंढ के मेंटरशिप दे, तब ये प्रॉब्लम हमारी दूर हो जाएगी। वाकई सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये मेंटरशिप की कमी है, जो आपने ठीक कहा कि ये लोगों को आगे बढ़ा सकती है, एम्प्लॉयमेंट भी और ऑर्गेनिक फार्मिंग भी, और इनफैक्ट हर एंगल से वो बेहतरीन है। एक सही मेंटरशिप मिले, देखेंगे हम अगर कॉलेज लेवल पे कुछ कर सकते हैं तो जरूर जी कोशिश सर। करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू। प्रज्ञा। Yes, sir. Sir, we have this question from Manasvi, who is asking if you can guide how youngsters can contribute in organic farming directly or indirectly. देखिए, डायरेक्टली तो आप ऐसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि आप जो खाते हैं आप उसको पहले ट्रेस करना शुरू कीजिए। क्या आपके पास उसकी कोई ट्रेसेबिलिटी अवेलेबल है? और जितना भी सामान हम कंज्यूम कर रहे हैं
वो मोस्टली इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है। अब उदाहरण के तौर पे आप कोई भी चीज खाइए, कोई भी लेबल उठाइए, उस पे आपको एक शब्द लिखा मिलेगा वेजिटेबल ऑयल। आप हल्दीराम का भुजिया उठाइए, और वेजिटेबल ऑयल दूध से लेके आपके मस्टर्ड ऑयल, हर एक चीज में वेजिटेबल ऑयल है। आप मुझे उस वेजिटेबल का नाम बताइए जिसका ऑयल निकलता हो, मुझे तो आज तक मिली नहीं वो वेजिटेबल। और जितनी डिजीज है, लाइफस्टाइल डिजीज, उसका सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा वेजिटेबल ऑयल। वो क्या, मैं आपको बताता हूँ। पाम ऑयल एक सबसे घटिया खाने का तेल है, सबसे सस्ता, सबसे घटिया, जिसको हमारे पूर्वजों ने कभी नहीं खाया। उस पाम ऑयल को इंडस्ट्रीज ने उठाया और उसको एडिबल बता के हर चीज में वो उसको आपको खिला रहे हैं। तो सबसे पहला काम जो हम कर सकते हैं वो अपने लिए कर सकते हैं कि हम क्या खा रहे हैं, पहले उसको मॉनिटर करें। हम ये देखें कि हमारे घर में जितनी प्रॉब्लम्स है ना, उन सब का कारण क्या है? हम इंडस्ट्रियली प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं। सब कुछ हमारे हाथ से छीन लिया गया है, और वो सब कुछ छीन के हमारे को एक लैब रैट के जैसे कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं, जिसकी वजह से फार्मर भी प्रॉब्लम में है, हम भी प्रॉब्लम में है। हम यदि अपने लिए, जैसे नेक्स्ट जो लेक्चर है ना अर्बन ग्रोइंग का, हर एक छत के ऊपर में वेजिटेबल्स लग सकती हैं, हर एक छत पे वेजिटेबल लग सकती हैं। और यदि हम फार्मिंग करना सीख जाते हैं, थोड़ा थोड़ा सीख जाते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत बेटर है। कारण क्या है? फार्मिंग हमारी एक नेचुरल स्किल है, जिसको हमने भूलना नहीं है। कोई कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वो गाय भी चरा सकता है, वो सब्जी भी पैदा कर सकता है, तभी वो खुश रहेगा। जबकि आप क्या देखते हो, जब व्यक्ति सक्सेसफुल हो जाता है, फिर वो फार्म हाउस बनाता है। ये अल्टीमेटली क्या करते हैं सभी जो फिल्म स्टार हैं, या जितने भी लोग जिनको हम कहते हैं सक्सेसफुल हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, वो अल्टीमेटली जाके फार्म हाउस ही तो बनाते हैं। फीलिंग तो वही लेना चाहते हैं, फार्मर वाली। तो इस फीलिंग को यदि हम हर रोज अपने जीवन की एक आदत बनाए, तो हम इसको हम अपने लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और हमें शहरों के अंदर अर्बन फार्मिंग को करना चाहिए। एक क्वेश्चन अभी और आया था, वो स्क्रीन से गायब हो गया। 1 मिनट में देख लेता हूँ जरा एक बार। सर क्वेश्चन इज फ्रॉम चेष्टा एंड सारिका, मोर और लेस इनके सेम ही क्वेश्चंस हैं कि हम ऑर्गेनिक फूड और वेजिटेबल्स को इनऑर्गेनिक से कैसे सेपरेट कर सकते हैं। देखिए, सेपरेट ऐसे कर सकते हैं। ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है, उसमें सबसे पहले तो बात यह है कि किसने ग्रो किया है, कहाँ ग्रो किया है। अगर तो आप बाजार से लेके आ रहे हो ऑर्गेनिक फूड, लेबल्ड फूड है, पैकेट फूड है, तो आप मान के चलो कि 80% चांस है कि वो उसको मतलब बाजार के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसको बनाया गया है। ऑर्गेनिक को कंज्यूम करने का फायदा तभी है जब वो लोकल हो और फ्रेश हो। अगर हमने उसमें प्रिजर्वेटिव डाल दिया, अगर हमने उसको किसी तरीके से बहुत लंबे समय तक शेल्फ लाइफ के लिए उसको बना दिया, तो उसमें ऑर्गेनिक वाली बात नहीं रहती है। जो नेचुरल स्किल है, जैसे मान लीजिए ड्राइंग है, ड्राइंग ठीक है, एक्सेप्टेबल है, लेकिन उसकी केमिकल प्रोसेसिंग एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं इसमें एक बात और कहना चाहता हूँ, हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग को ह्यूमैनिटेरियन प्रोस्पेक्ट से सोचना चाहिए, उसको कमर्शियल एस्पेक्ट से नहीं सोचना चाहिए। हमें इसमें हमारा जो नेचुरल इनहेरेंट जो स्किल यही करता था। ठीक है, अब जैसे उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ, दूध है, मिल्क, सभी लोग मदर डेयरी का दूध पीते हैं। आप मदर डेयरी के दूध को, पैकेट को उठाएंगे, उस पर क्या लिखा होगा? उस पर लिखा होगा रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, रिकॉन्स्टिट्यूटेड स्टैंडर्डाइज्ड मिल्क, यानी उस दूध को दोबारा बनाया गया है और स्टैंडर्डाइज किया गया है। अब दोबारा किस चीज से बनाया उन्होंने? पाउडर से बनाया, वेजिटेबल ऑयल से बनाया। उसमें अगर आप वेजिटेबल ऑयल का टेस्ट कराएंगे दूध का,
आप सबसे पहला काम पता है क्या क्या कीजिए, आपके घरों में जो दूध आता है ना, आप उसको टेस्ट कराइए। आप जब टेस्ट कराने जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि कोई लेबोरेटरी ही नहीं है जो टेस्ट करती है। आपको ब्लड टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी तो गली के कोने पे मिल जाएगी, लेकिन फूड टेस्ट करने वाली लेबोरेटरी आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि वो इकोसिस्टम ही खड़ा नहीं होने दिया गया है कि कोई अपने फूड को चेक ना करा ले। जब आप देखेंगे कि जो दूध घर में आ रहा है उसमें यूरिया भी है, उसमें शुगर भी है, उसमें मेलामाइन भी है, उसमें वेजिटेबल फैट भी है, दूध कहाँ है फिर? वो दूध तो है ही नहीं वो। और उधर दूध के फार्मर को पैसे नहीं मिल रहे हैं। कारण क्या है? पूरी एक अडल्ट्रेटेड फूड ने हमारे अर्बन कंज्यूमर्स को घेर लिया है। आपको मैं 2 वर्ड बताता हूँ। एक वर्ड है ब्लेंडिंग, एक है फोर्टिफिकेशन। सुनने में कितना अच्छा शब्द है ब्लेंडिंग। इन दोनों शब्दों का हिंदी में बोलते हैं मिलावट। हमें फोर्टिफाई ही क्यों करना है? जो ओरिजिनल चीज हमारे पास आई थी, पहले हमने उसको डिसइंटीग्रेट किया, उसको खराब किया, फिर उसके बाय प्रोडक्ट को हमने फोर्टिफिकेशन किया। ये बेसिकली इनको बोलते हैं ट्रेड बैरियर्स। ट्रेड बैरियर का मतलब ये है कि कोई दूसरा उस काम को ना कर ले ताकि सारा प्रॉफिट आपके पास चला जाए। तो हम कर क्या सकते हैं? बेसिकली स्टूडेंट्स की इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि स्टूडेंट एक तो खुद कंज्यूमर है सबसे पहली बात, और उनको पूरी जिंदगी एक अच्छी जिंदगी जीनी है, एक हेल्दी लाइफ जीनी है। तो अपने फूड को समझो। यदि आप अपने फूड को समझ गए तो आप सोसाइटी के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए भी अच्छा कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए भी अच्छा कर रहे हैं, और देश में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी उसको भी आप सपोर्ट कर रहे हैं। तो फूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझने की चीज है। आपको एजुकेट, कोई जगह ऐसी नहीं है जहां आपको एजुकेट किया जा सकता। आपके किसी कोर्स में फूड के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, कहीं नहीं पढ़ाया जाता है। जब आपको फूड के बारे में पता ही कुछ नहीं है और हम कुछ भी खाने लग जाते हैं, उससे फिर हमारा पूरा जो सिस्टम है वो खराब होता है, हेल्थ खराब होती है, सोसाइटी खराब होती है, कम्युनिटी खराब होती है। उसके ऊपर में टाइम बहुत थोड़ा है, ये लंबी बातें हैं। आपसे दोबारा कभी इंटरेक्शन करने का मौका मिलेगा तो उस पर बात करेंगे। लेकिन ये बहुत जरूरी चीज है। Sir, there is one more important question raised by Cheshta कि जी। अगर हम ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से सोचेंगे तो किस हद तक हम बढ़ती पॉपुलेशन की फूड डिमांड्स को सेटिस्फाई कर पाएंगे, एंड एट द सेम टाइम सर हम इकोनॉमी को कैसे लेकर चल पाएंगे इस दौर में जब सब कुछ इतना ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो चुका है, इकोनॉमी इतना डाउन जा रही है। उस दौर में हम कितना ह्यूमैनिटेरियन पर्सपेक्टिव से सोचें कि हमारी इकोनॉमी भी साथ साथ चलती रहे, एक अच्छे पेस पर चलती देखिए, रहे। ये जो दोनों वर्ड होते हैं ना, इकोनॉमी और डिमांड, ये दोनों वर्ड मतलब इतना झूठ बोला जाता है इसके। देखिए, एक पेड़ है, वो पेड़ खड़ा है, ऑक्सीजन दे रहा है, फ्रूट दे रहा है, बारिश दे रहा है, लेकिन उसको जीडीपी में काउंट नहीं किया जाता। उसको जीडीपी में कब काउंट किया जाता है? जब उस पेड़ को काट दिया जाता है। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूं आपको, यानी आपका पूरा फॉरेस्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर जीडीपी। जब वो पूरा फॉरेस्ट कट जाता है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ द जीडीपी। तो ऐसे ऐसे लोगों ने इकोनॉमी बनाई है जिनकी मतलब, अच्छा अब मैं आपको आज सबको एक असाइनमेंट दे रहा हूं, करना इस असाइनमेंट को। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट सब सुनते हैं, हाई एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट कम हो गई। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को निकालने का फार्मूला क्या है? एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट को निकालने का फार्मूला क्या है? आप लोगों को 2 घंटे सिर खपाई करनी पड़ेगी गूगल के अंदर, तब जाके कोने में छुपा हुआ कहीं मिलेगा। मैं आपको बता देता हूं, कंजम्पशन बेस्ड फार्मूला है। कंजम्पशन बेस्ड यानी अगर आप पेस्टिसाइड्स का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट बढ़ रही है। यदि आप ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ रही है। बिजली का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ रही है। पानी का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ रही है। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बढ़ा रहे हैं, ग्रोथ रेट बढ़ रही है। कहने का मतलब ये है, व्हेन फार्मर बिकम्स द कंज्यूमर, ग्रोथ रेट्स
इकोनॉमी बढ़ जाती है। जब फार्मर अपने आप को इंडिपेंडेंट करता है, अपने आप को सस्टेनेबल करता है, तो ग्रोथ रेट आपकी घट जाती है। तो बात यह है, इकोनॉमी को समझने की जरूरत है। ये सारे मॉडल हमने लिए हैं वेस्ट से। यदि हम अपना घर लुटा के उनका घर भर रहे हैं तो हमारी इकोनॉमी बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ रेट बढ़ रही है। यदि हम इंडिपेंडेंट हो रहे हैं, हम सस्टेनेबल हो रहे हैं, हमारे लोग हेल्दी हो रहे हैं, हमारा ड्रग्स पे खर्चा कम हो रहा है, हम तब उनकी ग्रोथ रेट घट जाती है। तो ये प्रिंसिपल्स जितने भी बनाए गए हैं इकोनॉमी के, इनको दोबारा से लिखने की जरूरत है, इंडियन पर्सपेक्टिव में लिखने की जरूरत है इनको। ये सब हम वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से पढ़ते हैं, जिसकी वजह से हम अपने हमारे पैर ही नहीं टिक पा रहे हैं, हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा है। और बात रही बढ़ती हुई पॉपुलेशन की डिमांड की, मैंने अपने लाइफ के 7 साल एक ऐसे महकमे में काम किया है जो फूड को हैंडल करता है। हर स्टेट में फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, कोऑपरेटिव फेडरेशन हैं। हमारे पास बहुत ज्यादा प्रोडक्शन है। हम खाली भारत नहीं, हम पूरी दुनिया को खिला सकते हैं, इतनी प्रोडक्शन हमारे पास है। लेकिन हमें किस चीज की कमी है? मैनेजमेंट की कमी है हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ नीयत की कमी है। एक गेहूं की बोरी को यदि हम अप्रैल में खरीदते हैं और मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, और यदि उसको सितंबर में उसको हम दोबारा तोलते हैं, जो गेहूं की बोरी अप्रैल में 100 किलो की होती है ना, वो सितंबर में 102 किलो की हो जाती है। वो कैसे हो जाती है? वो मॉइस्चर गेन कर लेता है। ये 2 किलो का जो है ना लालच, अब एक बैग में 2 किलो और करोड़ों बैग पड़े हैं, उनमें 2-2 किलो जोड़ो, कितना ज्यादा अमाउंट बन जाता है। इस अमाउंट को खाने के लिए ये सारे अनाज की बर्बादी होती है। इसको खुले में रखा जाता है, इसके गोडाउन नहीं बनाते, इसको ढंग से स्टोरेज नहीं करते। तो हमारे यहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं है, बहुत खाना अवेलेबल है, बहुत अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल है। सिर्फ एक ही बात की कमी है कि जो हम लोग इस चीज को जो जानते हैं ना, वो सही फैक्ट्स को सामने नहीं आने देते। उनका इंटरेस्ट यही रहता है किस तरीके से इसमें से हम लोग भ्रष्टाचार को करें, और ये भ्रष्टाचार बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। फूड का जो भ्रष्टाचार है ना, बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार। इसके बारे में यदि आप रिसर्च करना शुरू कर देते हैं, तो आपको पता लगेगा कि यार हमारे को इतनी तो जरूरत ही नहीं है, हम तो बहुत लोगों का काम चला सकते हैं। Thank you so much, sir. Thank you so much. Moving on, we have another guest, Neha Dutt, a passionate project blogger who has completed her master's in sociology, certificate art and design from University Arts London. She is currently pursuing law. She has also worked at the head corporate office Kotak Mahindra Bank under the VP for Public Relations All India branches. She believes that education is the key. Over to you, ma'am. Very good afternoon to my fellow speaker, firstly, for speaking on organic farming, and everybody here. A very, very happy National Youth Day to everybody. Thank you, like I had said, for a very meaningful invite, enhancing key social changes in certain and such important aspect. For me, I think, firstly, my name is Neha Datta, and thank you so much for the introduction. I'll be speaking more, I think what I'll be speaking on is something that everybody in an urban space, in the fast life, how I began my journey in a city, everybody can relate to. My initiative as a passion blogger on Instagram by the handle Garden and Home, as the name suggests, is very simple. It was the initiative for me to learn myself, learn and experiment, create, which went on to become what it is today, where I have been able to collaborate with a lot of people on the same field and draw awareness of the same.
So urban growing for me is creating, for me today has become sustainability when it wasn't. So when I think I started growing on the 32nd floor. It was just like, I'll say it's as simple as bringing home a pet when you bring a plant. So I started growing and thinking, like, as Mr. Kamaljeet was speaking, the idea is to know exactly what you're eating. It's a lifestyle choice as well. And it is how much you care for it. So I started on the 32nd floor with grow lights. When it really depends on how much of sunlight you get when you start like that. It also depends when you're growing in an urban space. It depends on how much sunlight you get. It depends on how you're watering, or how many factors which will go otherwise. So, but while failing, while learning, I was able to grow with grow lights, Swiss chard. I was able to grow radishes. I was able to grow banana peppers. I was able to grow kale. I was able to grow many of these varieties. Today, my initiative would be to ask, uh, create sustainability, value creation, where today we have awareness on the creation of sustainable food systems. What are sustainable food systems is something you will find when you go to my blog. But to speak about it, it is creating, I come from an environmental perspective when I speak. So it is creating a food system where, without question, obviously, as Sir also said, the healthiest food out there is when you grow it yourself, uh, from which is free from any chemicals, while at the same time it also creates an environmental footprint, whether it is environmental, economic, social systems that surround food and the immediate environment, uh, around food or around yourself. Today, sustainable agriculture is being used as a term. It is being implemented, which definitely brings something to the table of organics, and what's environmentally friendly compared to mass agriculture. Mass agriculture is obviously not, I would not call it, it isn't the best environmentally friendly, or leaving the most ideal environmental footprint in the immediate surrounding. However, I would also say it is inevitable, because when we look into when I talk about the economic footprint, we also need to look into the fact how the anything organics, when we go into a store, let's say like a very good store like Nature's Basket, or any good store, or the immediate person around in the sabji mandi or wherever, who is giving you an organic product, because it is not processed, it is not a processed food, it is free from contamination, so it also has a very less shelf life. So when I was living in Bombay and working, what my life was in the head office of the finance sector, I would look at a product which has more shelf life with the given lifestyle I had. It's a very fast life. So I would definitely buy my tomato or my potatoes, and I would want it to last for, at least a week, which will not be the case with organics, because it has a very less shelf life. I'm not trying to put in this or that, but I'm trying to clear how around our lifestyle, how we make these choices, and how many people look at longer shelf life, also accessibility, affordability. So best way that I found is, why not grow it myself? And I started there.
or all kinds of growing practices leave an environmental footprint, the immediate surrounding, and it does make a difference on a larger scale when combined. I am not critical of all kinds of growers, whether it is somebody just making a green space and decreasing the carbon footprint in incorporating it into their home decor with just about only house plants. But that being said, it's not enough. It's appreciable, but the most focal point would be, if at all, creating sustainability is leaving the healthiest footprint would be what ecosystem is one creating. While creating, when we talk about ecosystem, it is where we have to understand that every microorganism, it's a bit similar to permaculture also, where I do align, where it is the most natural occurring ways of growing, whether you think about pesticides, or whether you think about an ecosystem itself does a lot of the job in the natural ways possible. For example, if you look at beneficial insects such as ladybugs and you're growing in an eco space, ladybugs will take care of the pests, some pests that they are beneficial insects. So that's why when you go into my blog, you will see how I write very specific to varieties and what those varieties do. While caring for and creating eco spaces comes in the method and practice of organic growing, gardening, farming. For me, I'm very grateful, as my former and speaker was also speaking about it, that how important it is. I'm very grateful to be in the education sector today, because without education, there is no awareness. Without spreading the knowledge or being able to incorporate it to any system, it is not possible to draw a lot of difference in the field that we're talking about. So we have been very lucky, where we, in an educative space where I work as Director of Operations and Child Welfare today, we have been able to bring sustainability and create sustainable spaces in our campus. And not only that, we have been able to also recently take part in SDGs, which is the Sustainable Development Goals Pact 2030, where our students have worked on projects which is scholarship based on clean water harvesting or different methods, eco spaces, something that I passionately care about myself, and also on sustainable fashion. Hence you learn about the varieties very specific. Having said that, we have been able to create sustainability in our immediate environment, and that is what is eco space or environment footprint. I mean, we talk a lot about self-awareness today. I'm not saying I don't understand, but I don't understand how we are completely self-aware without being environmentally aware of our immediate surrounding, which is what you're eating, what you're breathing. And that is just about caring about just your immediate surrounding, where you're sitting, where you're living. And how would you make a difference to that is really something that one can initiate only oneself. So of course, I'm not going to get too much into organic farming, because that's already been covered by Mr. Kamaljeet, and I think he's done a wonderful job.
So the objectives of while speaking, through my blog, I have been able to also collaborate with Project Janbhoomi in Actis. I think I have advocated for them in my blog, and where it is very impeccable and wonderful to know what they are doing with heaps of waste. That's where what I want to talk about as well when we talk about our immediate surrounding is, one is the compost. Something to really look into, and something to something that is very doable is composting. And I remembered doing a field study during my sociology in MU, and that was on DMC, on dumping grounds. And today, when I think of it, there is no better way that one could take off the burden from the dumping grounds is to learn how to compost. It's very simple. We in at MBRS here we already have a facility to compost, but compost bins are, it's just out there. Whether you see a gardening shop or you ask them, or even you can compost in by digging method as well. But more, I think more appropriate and more environmentally friendly would be a compost bin, or those matkas that you get made of clay. You can compost there as well, and you can ask your nursery, nearest nursery, how that is done. And all the food waste that is going to go out, that is heaps of food waste that you can use to creating manure. And that is that makes a very big impact. Even if you're a grower, even if you don't have the time to grow and give that much time, because it does require time, and if you don't have that much time with what you're doing, then maybe look into composting, creating a sustainability by creating manure. You don't need anything more than a compost bin to create manure, and you can obviously help your nearest grower or anyone and provide manure while you're lifting off the burden from the dumping grounds. That would be one of my very important goals that I am working on currently. Another thing I would like to speak for our growers who are today in terraces or balconies and are in high-rise buildings. I know it's very easy to say, like, go out there, grow your own thing, grow your own food. But how do you do it when you are living on the 32nd floor, or you're living where you have a terrace, you're living in a residential society? And how do you do that? Well, it's possible. I did not have a balcony, I did not have a terrace, but I had just about a window compartment. And what worked for me were grow bags. That's something where you can grow food. Planters are not exactly, they will work, but the most ideal thing would be definitely grow bags, where you get inches by inches of very simple varieties, like, say, let's say fruiting varieties like tomatoes require about 4 hours to 8 hours of sunlight, depending on the variety you are growing. Further than growing just about any variety, I also spoke about seed revolution, which is where you begin with the seed of what you are growing. When I say variety, you think about the seed. It begins with the seed. What seed is it? Is it chemically treated? Is it hybrid? Is it non-GMO? It doesn't matter really. I mean, as you're practicing organic gardening, but what if it began with the seed itself? The healthiest seed that is out there would be
an heirloom, which is procured through a non-open pollinated method. It's a natural method. And you will see when you grow heirlooms, not every tomato is of one size. And it is not supposed to be. Originally it never was. So heirlooms are those, again, it's all out there in my blog, the varieties, and there is a very huge difference. I think heirlooms is what made me want to grow more and more. And they are called rare, but they're not exactly rare. And then if you're looking into heirlooms being a little on the higher, little expensive, but you're looking at seeds. And then when you grow, you're looking at optimal sustainability, where you buy 10 seeds, out of which I assure you, in an heirloom variety, definitely 8 will germinate without failure. They will grow. And of course, you will have experimentation, you will have trial and error as a grower, which is on a minor league like me. I don't do large scale, but enough to create sustainability and create a healthy environmental footprint, social, economic, every way around in my immediate surrounding. So from that plant, you save your produce, your harvest, and from that produce of an heirloom variety, you are looking to save an optimal amount of seeds. So that is not exactly, if you're looking like heirlooms, most people ask me, oh, heirlooms are a little expensive, aren't they? No, not if you're growing them, definitely not. So as a grower, that is another thing. And as a blogger, that is something I write about, very specific to varieties, which you will find on my blogs. Another way why I spoke about permaculture is because I do believe today in companion planting and the natural way of growing, and at the natural occurring state of an eco space and creating the same. Sorry. So companion planting is a little different from organized farming. When it's completely organized, it's a little different from organized farming. It is the method of identifying varieties. What varieties are you growing of plants who will naturally promote each other's growth and productivity? A design, for example, companion planting, pollinator friendly. There are many pollinator friendly varieties, flowers such as zinnias. For example, you are growing a variety which is does not self-pollinate. It does not self-pollinate, and you are obviously automatically dependent on pollinators. So what do you exactly do if you are growing in a terrace let's say metros? Most people today, like in cities like Bangalore, Hyderabad, or Pune, they have terrace gardeners. And but in Bombay, most of them are balcony gardeners, not even terrace gardeners. So what do you do then? So that's when you grow varieties such as zinnias or cosmos, who are highly pollinator friendly, and they will bring on the bees. And if you look into varieties such as milkweed, who call on the butterflies such as the monarch butterflies. And there are many other varieties. If you go find out, you will, there's many on my blog as well. And another way is, how do you keep the pests away while feeding, while feeding bees, while feeding butterflies, while pollinating and creating more fruit and productivity? Is varieties such as marigold. If you're growing marigold with a cabbage patch, you're growing cabbages, and you don't want to use pesticides, you know,
you do use neem oil. Neem oil is a very, very good, way of keeping off pests of your plants. But you also, neem oil doesn't always work when you're growing something like cabbage, or when you're growing something like cauliflower or collards, or greens like mustard leaves. So what do? You grow marigolds around them. You grow a bunch of marigolds around them, or you grow citronella plants around them. There are many other plants which will naturally keep the pests away, in addition to using something like neem oil. So like I said, that's raised beds and grow bags also give you a lot of control over soil, in soil amendments, which you do not find in land. That is one plus of growing in urban spaces, is you having the maximum amount of control over the soil you are using and the mixture of soil. Whether it is a mixture of, cocoa coir or cocoa peat, or you're mixing vermiculite, or you're using manure, or with a mixture of your native soil, or however you design your soil. And as a first-time grower, you get to observe the plant behavior. You get to observe your plant, or whichever variety of food you're growing, vegetable, or you're growing, and you can amend the soil accordingly. Okay, this is not working out. Why is the plant behaving this way? Or and then you amend. You have control over that, which you do not have in acres and acres of land. Easily, you do not have control over soil, which takes much longer. But in raised beds, or in grow bags, or even planters, whatever your ways, or there are many other ways as well, which you will find in my blog again. You have control over soil. That's one plus side that you should think about. Like, okay, I want to grow, but it's not going to, I don't have land. How do I grow? Is it going to grow like it is? Yeah, it is absolutely going to grow. And you should think that you are the one controlling the soil, which doesn't happen for most growers who are growing in land. It's not that easy. You can create maximum drainage, which is one thing that is required for root growth, root stimulation. When you are looking into the spreading of the roots. Roots require oxygen to breathe, to spread. When you're looking into things like that, you are well to do, and you should feel very at an advantage point. When you think about, because I get a lot of people ask me, I don't have land. How do I grow food? So these are the plus points, and it's definitely doable. And you do create a very healthy environmental footprint around, whether it is decreasing the carbon print, or it is about production, sustainability, social awareness, a lifestyle choice. Once you do it, like I said, it's getting a pet home. When you get a pet, you do have to take on responsibility. You do have to take on some form of liability. You do have to take on, it doesn't just come, but you create a form of bond. It is the same as creating a growing space. You do have to give your time, if just like you would to a pet, dog, or cat. I'm sure a lot of you, when we talk about the youth here, it's National Youth Day. So I know there are a lot of pet lovers out there, and I know there are a lot of pet lovers, whether it is all kinds of pets. But it's the same for creating a growing space. It's just about caring enough. And once you get into it, it will make a lot of difference in your life, as it did to mine. And
today I have a very large audience in my blog, but I didn't. I have been able to collaborate with people, even companies like skin companies in the US, like Ayana Denise Skin, just for how they are incorporating turmeric into their products now. For India, for us, turmeric is a plant from root to leaf to every bit of that plant is edible, usable. You bring by raw turmeric. It's just like using powdered turmeric. You don't even need to look into Haldiram's or any of that or Google any of that. Just grow it. You need a grow bag. You have gone and bought what, 15 grams of raw turmeric from the market. Doesn't matter what it is, how it is, whether it is organic, not organic, it is turmeric. You bring it home, you use it, and then you will see, when you see these little, you'll see, it's also in my blog, you'll see a little red, those are called the shooting out, like the roots shooting out. If you leave it for a while, you use a bit of it and you leave some for it, and then you'll see new growth coming out of it on its own. What you do is you get a grow bag, you put it, you grow it, you see how much you get back in return. And that is what, and same is with basil. Basil is another variety where you don't have to do much. It reseeds very easily, whether you're talking, and there are, I think, about, tons and varieties of basil, like lemon basil, Thai basil. I have it again on my blog, which you can check it out, different varieties. They bring ounces and ounces. If you don't want to grow flowers and it's too much, it's okay. Basil will bring in all the pollinators there is, whether it's butterfly, bees, and it reseeds itself, creating new saplings. You don't have to, by the time monsoon hits, you will see that, around your basil tub or plant or around it, if it finds a place, it will reseed and grow new saplings on its own. So these are the two varieties that I was able to talk about to Ayana Denise Skin Clinic. They are based in US, and how they are now growing and using these products. Using these in their skin-based products. So not only talking about taking it in, but we are also talking about topical use, whether it's your skin or your hair or eating it or all of it. That kind of sustainability, is something that it's commendable. And if you start, I assure you, you won't stop. It's just the point of starting. And I think when I started my blog, it was more for myself. It was not for others. It was more for myself. And today I see I have reached an audience of 27,000+ people. But initially when I started, and also I do have celebrity following, and I don't know how that happened, but honestly, I started this for myself when I had my son, and I basically had nothing to do, and that's not me. So I had my son and he was premature, and I had ounces of time because all I had was him. I left my corporate job, and what I started to do was I wanted to learn and I wanted to do something. So what would I do? What is it that I possibly could do? My grandfather was a very high ranking agricultural official. Both my parents are founders to Educational Institute organization, the MBRS Education Society, but they have been avid growers all through their life. And
I left, I was working in Bombay, and I thought that's the only life skill I probably don't know, because I know swimming. Among sports, when you talk about life skills, as Mr. Kamaljeet was also talking about, that it is on humanitarian, or it is I think he said something about what he meant was like a life skill. Sorry. So a life skill. So basically, it's a life skill. When you think about sports, I think self-defense and swimming are life skills. Cooking is a life skill. So I've been there, done all of that. But what do I do next? So I thought growing your own food, having maximum control over not how you're eating, but what are you eating from scratch, which is literally from the seed, which is not chemically treated. You need to look into seeds as well. There is no harm if the seed there's no harm in hybrids, but chemically treated seeds, if somebody is growing from chemically treated seeds, and then you're watering and doing everything organic to the plant, it's still organic, but it's not. You begin with the seed, and that's why I call it the seed revolution. And there's a very popular hashtag today which I started, and that is Grow Food Not Lawns and Urban Gardeners Republic. It's a community worldwide. There are so many people who's doing this right now. When you talk about sustainability and caring for your own surrounding and your immediate surrounding, beginning with food, air, your self-awareness, your lifestyle choice, it adds a lot. And trust me, it's very gratifying. So when I went through that phase and when I picked it up, I literally looked at YouTube and I would, think like, how is that possible? And today I get questions on my blog where it looks so good. You see it in the blog, it looks beautiful, and you want it to be real. What you want is, that is what I want. What I'm seeing, that I'm looking at, that it's beautiful. I want to be able to be holding it in my hand, and I want to grow that variety, and I want to have it, and it looks beautiful. Yes, it looks beautiful, but trust me, I have failed and experimented, and I failed terribly. I know it looks beautiful, but if you're planning to grow, be prepared to, I still fail, and on many varieties, to acclimate them to the environment, to the soil, but you will get there. It's just a part of beginning, and I'm telling you from the expertise of a grower today that I do still experiment, and I still have trial and error, and I do fail on a daily basis with the job in hand. But I feel very lucky that in the education sector today, we have been able to draw not just sustainable spaces, and but also the part where we have events such as SDGs, APAC 2030 on scholarship, which is allowing students to awareness is the education, and awareness is the first step, and participation is the first step. Development is what matters. And they have been able to draw so much from it. And it is lovely to see even today while I'm sitting here, it is lovely to see that on National Youth Day, that this is the topic that is being covered, and it makes a lot of difference. So thank you. Thank you so much. Thank you so much, ma'am, for such enlightening words. Now the floor is open for questions. So if anyone has any questions, please. May I ask any question? Yeah, sure. Go ahead. First, good afternoon to everybody. To ma'am, I was asking that is there any hope that we can consider agriculture as full-time profession? Right. I think Mr. Kamaljeet
answer that question. If you go to my blog, you will find agri vlogs, I think is their name. They are collaborated with many other professions with agriculture, and you can check them out. There is a lot of networking today, and yes, you can consider agriculture as a full-time profession, whether you're looking into farming yourself or you're looking at for a job in the government sector. I'm not aware, but of course you can. And I mean, I would say, why not? But you should, I mean, there is a lot out there. I know there is one which is agri blog. They talk about the exams and what on salary basis, what jobs available. So you can check them out on my blog. And I say, why not? I wouldn't be able to tell you exactly, but if you're asking me, can you? Yes, you can. Definitely you can. But you know, do your research, find out. There's definitely a lot of scope out there. Thank you, ma'am. Any other question? I think we are done with the questions. So now I think it's time we rethink our perceptions and try to deliver good while being good. So now moving towards the end of the program, thank you so much everyone for such valuable insight. The teachings of today will definitely stay with us forever. And with this note, we reach towards the end of this informative and spectacular session. I would love to invite Ram sir to deliver the vote of thanks. Over to you, sir. Yeah, thank you, Pragya. It's been a pleasure to be presenting my vote of thanks. First of all, thank you, Neha ma'am, for giving our students the insight about how to grow these fruit, at least those items which we can grow, and I mean motivating them to take up this task. At the same time, I mean, this is the younger generation which needs to be told that these things, small things, they're very important. At least you can take up their own your own position, how and which kind of food you want to eat. At the same time, I must be thankful to Kamal sir for providing the insightful that how and why it is important that we are trying to grow our own food. So I thank everyone for their presence here. I thank especially the principal ma'am for permitting us to organize this event. And yeah, that takeaway lesson for all my volunteers here is that they must do something. They must think something. This reading and learning and then rote memorizing and then writing something in the exams, I mean, they are not going to help you out. You have to be innovative, create something just on this auspicious occasion of the Youth Day that is dedicated to you all. You have to decide the future that you want, what you want that from yourself, from your society. So if you want, I mean, I would quote Mahatma Gandhi, be the change that you want to see. So these are the things that you yourself will have to start. So these are the catalysts. Neha madam or Kamal sir, these are all catalysts to make you feel in that, feel and think in those directions. So with this, I thank both the guest speakers and all my students and the teachers who have joined in. Thank you so much. Thank you for joining me. Thank you. Thank you so much, everyone. And with this, we come to the end of this. You all may leave the meeting now. Thank you so much once again. Thank you. Thank you. Now we can end the meeting. I get that.